Kuntal Joisher, sir, welcome to the Nerdish Mic. Believe me, sir, absolutely thrilled to welcome you on the show. Thank you so much. Happy to be here and happy to have a conversation with you. Same is the case with me, sir. But actually, sir, I have heard a lot about you. And sir, the thing is that whenever I hear about you, there is a common term that is usually associated with you, and the term is known as toughness. So, sir, I would really want to take you back to the engineering college. Do you think that some of that portion was extracted out of engineering college? Uh, I don't know if toughness came from engineering college, but I think if something that came from engineering college was, or through the entire engineering 4 years and the entire life and the entire journey through that, I think if something that came was discipline Oh. and some rigor, Mhm. frankly speaking. While I would not be a model engineering student because I was always on the blacklist. I never actually went to the college. I didn't like going to the college. But yet, I was first class throughout all the semesters and Yeah. I, just got by. But, there were some certain things that I really, really think that engineering kind of I learned through that 4 years journey. And I think one of them is versatility of the field itself, Yeah. where an engineer is not, I mean, people think of engineer as, oh, मेरा computer बिगड़ गया है, software engineer को बुलाते हैं, oh, मेरा ये हो गया, engineer को बुलाते हैं. But believe me, you could be any engineer. You could be a mechanical engineer. You could be a, instrumentation engineer. On the other hand, you could be a IT engineer, and you would practically have a good overall knowledge of a lot of fields. Yeah. It's I know so many of my friends from mechanical engineering today who are software engineers, and consequently, even on the other hand, where someone like me who is a software engineer is a mountaineer and a nutrition coach. So I do think that engineering as a field kind of makes you very versatile just by the nature of how the field is, where it is more about problem solving, more about logic, more about understanding the subject matter on hand. Mhm. And so I truly believe an engineer can do anything. And that is what I have taken away from those 4 years of engineering. Yes, I became a software engineer and I did software engineering for a very long time. And even today continue doing it for part-time basis. Mhm. Uh, but I do think, engineering is what has made me what I am today. While I don't want to kind of say, अरे मैंने engineering किया इसके लिए मैं आज ये बन गया. Probably if I would have done something Mhm. else, I would have still just done fine in my life. But I personally love the field. I personally love problem solving. I personally love learning new things. I personally love having an open mind. I personally love being very science and evidence based. Yeah. And a lot of this mindset comes from engineering Mhm. and math and software, and just how that field is so logic driven or so problem solving driven. So uh, yeah, while I would not say I became tough through engineering, Yeah. but I do think some bit of discipline, just because 8 semesters of engineering is quite tough, Yeah. Yeah. and to get through all that level of material, reading material, and then do all those things, you do need some discipline. You can't just be like, I remember किसी तो मैंने सीए कोई सीए का टॉपर था, मैंने उसका एक बार वो वायरल हुआ था वीडियो देख लिया था, एंड ही वाज लाइक, हाँ मैंने तो टॉप किया, मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, मैं तो ऐसे ही थोड़ा बहुत पढ़ लेता था. Mhm. नो, आई डिडंट डू एनी ऑफ दैट. जब भी मैं Mhm. पढ़ता था तभी मैं एकदम ही सॉलिड पढ़ता था, और लंबे लंबे Mhm. significantly disciplined way में पढ़ता था. Mhm. And look, I'm an average student. I Mhm. have always been an average student through my entire academic journey. So I think if you are an average student, which 99% of us are, Mhm. but if you want to become an above average, kind of a student or a professional, there's no magic solution here. There's no magic Mhm. bullet here. तुम्हें hard work करना है, तुम्हें discipline लेके आना है, तुम्हें Mhm. consistency लेके आना है, और you have to dig deep and just get through all of Mhm. this. There's no magic solution here. हाँ यार मैंने किसी से पेपर ये ले लिया, मैंने यहीं से क्वेश्चन उठा लिए, ये कर लिया वो कर लिया. लोग बहुत सारे शॉर्टकट ढूंढने की ट्राई करते हैं.
फ्रैंकली स्पीकिंग कोई शॉर्टकट है नहीं। हम्म, उससे अच्छा उतने में टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, उससे अच्छा चुपचाप बैठ के पढ़ाई कर लो ढंग से। या हाँ बिल्कुल यू सर। नो मैंने गलत वे में पढ़ाई की, मैंने थोड़ा रट्टा मार लिया। तो जी जी। आई विल काइंड ऑफ सजेस्ट ऑल द अपकमिंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, प्लीज रट्टा मत मारो। थोड़ा मैटर को समझो और फिर रट्टा मारो हम्म, तो चलेगा, बट मैटर को समझे बिना मत रट्टा मारो। मैं तो मैटर को समझे बिना रट्टा मार सकता हूँ। हम्म, तो आई हैड अ वेरी हार्ड टाइम व्हेन आई वेंट इनटू माय मास्टर्स कोर्स। और वो ट्रांजिशन थोड़ा हार्ड था पहले 1-2 सेमेस्टर में। So anyone who's an upcoming engineer who's in engineering right now, understand the subject matter. It's थोड़ा एफर्ट लगाओगे तो ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस कर रहे हैं हम लोग, कोई रॉकेट साइंटिस्ट तो है नहीं। बेसिक प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करने हैं हमें। तो हम्म, थोड़ा बहुत एफर्ट लगा लो और साइड में थोड़ा मेमोराइज कर लो यार, एट द एंड तुम्हें मार्क्स भी चाहिए ही। तो हंड्रेड दोनों का परसेंट गेम है, बट हम्म, बिना सब्जेक्ट मैटर अंडरस्टैंड करे रट्टा मत मारो। ये हम्म, मेरा काइंड ऑफ एक अनदर लर्निंग, अनदर बिग लर्निंग दैट आई शेयर विथ any time I'm in an engineering like a setup where I'm giving a talk to engineers or budding engineers, I tell them please ratta mat maro. Yeah, as हम्म, I said, thoda asterisk subject matter समझ के फिर रट्टा मारो। तो हम्म, that would be kind of another learning. But yeah, I think at the end of the day what engineering gave me is a lot of discipline and a lot of rigor, and that is हम्म, something I attribute to those हम्म। formative years of my life. 100% सर, सर क्वाइट रिलेटेबल एज वेल। सर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डिसिप्लिन एंड दिस टफनेस एंड फियर्सनेस, सर आप क्योंकि एक बहुत ही टेक्निकल और प्रैक्टिकली ड्रिवन फील्ड से इन्वॉल्व करते, यू बिलोंग टू दैट फील्ड सर बेसिकली। तो सर एक्चुअली में सर वहां पे हर चीज एक फिजिकल बेसिस पे इम्प्लीमेंट की जाती है, तो सर ऐसे में रट्टाफिकेशन इज आई फील क्वाइट एप्लीकेशन लेस। See, again, every person is in a very, very different context. हम्म, Uh, अगर आपका फोकस थोड़ा बहुत भी मार्क्स की तरफ है, हम्म, तो आई डू थिंक दैट वंस यू हैव अंडरस्टूड द सब्जेक्ट मैटर अ लॉट बेटर, इफ यू आर एबल टू मेमोराइज दैट। लुक, फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा केस दूंगा। अभी क्वेश्चन था एग्जाम में, बाइनरी सॉर्ट का एल्गोरिदम लिख दो। I find that to be a very stupid question. Why would you ask someone to write an algorithm? एल्गोरिदम मैं रट्टा मार सकता हूँ इजीली, बट इस एजुकेशन सिस्टम ही इस वे में बनी है। तुम पिछले 5 साल के पेपर देख रहे हो, और पिछले 5 साल के पेपर में ऐसे 10-15 क्वेश्चन है जो सारे के सारे इजीली रट्टा मार सकते हो। तो मेरे जैसा बंदा श्योर मुझे इंजीनियरिंग भी पढ़ना है, बट मुझे सिस्टम को भी तो क्रैक करना है। तो मैं तो हर वे में देख रहा हूँ, तो मैं इंजीनियरिंग का दिमाग उधर भी अप्लाई कर रहा हूँ कि सिस्टम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। या तो उस वे में भी मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा हूँ। तो आई एम लुकिंग एट दिस एंड आई एम सेइंग यार, बाइनरी सर्च पूछ रहे हैं, कोई एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहे ये लोग। या हाँ, एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये लोग तो चाहते ही नहीं है मैं मेरा दिमाग लगाऊं एग्जाम के टाइम में। मैं क्यों लगाऊं मेरा दिमाग? रट्टा मारता हूँ एग्जाम में, फर्स्ट क्लास मिल गया, ठीक ठाक है, आगे जाके देख लेंगे, जॉब मिल जाएगा, तभी तो कोडिंग करना ही पड़ेगा। मर मुरा के तभी कोडिंग सीख ही लेंगे हम लोग। तो दैट वाज काइंड ऑफ माय माइंडसेट। And again, I will desist everyone from adopting such a mindset. And I do hope that the curriculum is also changing accordingly and the exam strategies are changing accordingly, such that exams are more practical, question driven, where they are not asking stupid memorization questions, but rather they are asking you, यार हाँ ठीक है, तुमने ये समझा, तुमने ये सीखा तुम्हारे कोर्स में, अब तुम इसको अप्लाई कैसे करने वाले हो रियल वर्ल्ड में। एल्गोरिदम तो कोई भी रट्टा मार सकता है, बट वो एल्गोरिदम को कैसे एक सर्टेन सिचुएशन में तुम यूज करोगे। लाइक जैसे बाइनरी सर्च हो गया, एक डिवाइड एंड कॉन्कर का माइंडसेट हो गया, और वो डिवाइड एंड कॉन्कर का माइंडसेट तुम किधर भी यूज कर सकते हो, दुनिया के कोई भी फील्ड में यूज कर सकते हो। राइट, तुम्हें डेटा सेट के थ्रू इजीली जाना है, तो तुम्हें अगर डेटा सेट में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स है, पर तुम्हें उसको छोटे में कैसे तो जाके देखना है कि कहाँ कैसे थोड़ा स्मार्टनेस यूज कर। बट ऐसा none of that was even in the classroom they were teaching binary sort, and even in the exam they were asking binary sort. There was no or search, but there were never questions around application of any of these concepts, which is at least I graduated in 1997.
सो अभी तो 25 साल हो गए मुझे ग्रेजुएट होके, नहीं सॉरी 2001 में मैंने ग्रेजुएट किया था, तो अभी ऑलमोस्ट 20 साल हो गए काइंड ऑफ हम्म, ये आई डोंट नो ये फील्ड कितना चेंज हुआ है उतने टाइम में। हम्म, आई डोंट नो आपके टाइम में कैसी एग्जाम्स होती है, एग्जाम्स में हम्म, क्वेश्चंस कैसे है, हम्म, बट गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन ऑफ मेमोराइजेशन, I do think there is some application. As I said, I would still focus on learning and applying the concepts. But then हम्म, there are always going to be certain questions that are just like थोड़ा बहुत तो तुम्हारी मेमोरी को टेस्ट कर रहे हैं इन सम हम्म, सेंस। लाइक हम्म, अगर तुम्हारा 100% पेपर है जिसमें थोड़ा बहुत एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, बट बाकी काफी कुछ है जिसमें तुम्हें याद भी रखना है, काफी कुछ, हम्म, काफी सब्जेक्ट मैटर याद रखना है, या फिर तुम समझ के भी लिख सकते हो, बट फिर तुम्हारी लिखने की स्पीड घट जाएगी, फिर काफी सारे वो सारे इश्यूज आएंगे। सो आई फील इट्स अ हम्म, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इफ यू I will change it and say, if you have not understood the subject matter, don't हम्म. memorize it. That would be my kind of Advice. approach. uh, but again, if you think that you don't need to memorize, memorization is not really required. If you हम्म, understand the subject matter and you are able to write quickly in the exam, and still do a good job at the exam, because यार कुछ भी बोल लो, हमारी सिस्टम फिर भी एग्जाम ड्रिवन है, हमारी yes, sir. सिस्टम लाइक जब भी प्लेसमेंट्स करने भी आते हैं, हाँ तुम तुम्हें कोई भी केटी नहीं है, तुम हर सेम में फर्स्ट क्लास हो, हाँ एटलीस्ट देयर इज अ चांस दैट तुम्हें जॉब मिल जाएगा, कैंपस प्लेसमेंट हम्म, हो जाएगी, और थोड़ा बहुत तुमने समझ ही लिया है तो यार इंटरव्यू में भी थोड़ा बहुत बोल ही दोगे या थोड़ा बहुत कोडिंग कर ही लोगे। सो आई एम जस्ट सेइंग एज समवन who is maneuvering the engineering world, you are better off learning the concept, understanding the concept. But if you think that memorization in your context kind of makes sense because that is going to help you crack the exam a lot better, why not? yeah, 100%, sir. Actually, sir, I asked this question out of curiosity. I feel like now you have completely answered the question, sir. I really want to talk about your passion, which means to mountaineering, sir. Sir, actually, आपने कब ये realize किया that you are really driven for mountaineering? uh, I think the first time I kind of realized ke, I love something else. लाइक Hmm, तुम्हें लग रहा है कि तुम 10 साल से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में हो, तुम बहुत पैशनेट हो, एंड यू आर रियली रियली इन लव विद दैट द फील्ड, hmm, बट देन यू सडनली वन डे डू समथिंग एंड देन यू रियलाइज यार ये तो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है, दिस hmm, इज जस्ट बिकम लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ रूटीन बोरिंग थिंग, hmm, बट मुझे ये चीज अच्छी लग रही है। एंड hmm, it happened on a very by chance trip that my wife and I took to Shimla, where we ended up climbing a small mountain. I would not call it a mountain, I would call it a hill, which is called as okay, Hatu Peak. It's in a place called Narkanda, and it's about 11,000 feet or so. And हमारे लिए तो लाइफ का फर्स्ट ट्रैक था, बोथ मेरी और मेरी वाइफ के लिए, और एटलीस्ट जितना तक मुझे याद है, मे बी बचपन में मैंने एक दो ट्रैक किए थे, बट फॉर अस इट वाज लाइक अ फर्स्ट, like 1 day hike and in the snow and everything. And I still distinctly remember how I felt when I was standing on the top. I remember being surrounded 360 degrees by huge Himalayan peaks and standing in middle of the snow, and it was so quiet with not a single human being in hundreds of kilometers के distance. मैं, मेरी wife और एक Himalayan bhotia dog was on the top with hmm, us, and it was so peaceful. And for the first time I felt this immense, like deep happiness, uh, kind of like running through every part of my body, every cell of my body. And for the first time in my life I was able to kind of exist in the microsecond of that moment and not worry about future में क्या होने वाला है, not ponder over the mistakes I made in past और क्या हुआ था, and then always in this this kind of like cycle of फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हो, hmm, पास्ट में देख रहे हो, hmm, एंड देन while doing all of that, प्रेजेंट तो सामने से ही निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, बट इन दैट मोमेंट आई वाज एबल टू
like exist in that moment and live that moment and be happy in that moment and truly feel alive in that moment. And while ये सारी बातें लगती है क्या पागल हो गया है, ये शायद ये ड्रग्स लेके बैठा होगा, कुछ तो इसको सठिया गया है, like कौन ऐसी बातें करता है, and like believe me, for me it was a game changing event, for me it was a life changing event. For the like I didn't fall in love with the mountains, but I fell in love with that state of mind that I was able to achieve. And I thought, yeah, I would like to feel like this for the rest of my life. So If I'm feeling so, was that peace sorry, and go ahead. serenity? Was that peace and serenity of that place? I don't think it had anything to do with the place itself. It was just my own personal state of mind that I was able to kind of get into. And probably for the 30 years, जब भी तुम बचपन और ज्यादा बचपन का तो याद नहीं है, then suddenly you are in your college and engineering and then masters and तुम्हारी लाइफ ऐसे निकल रही है बिफोर लाइक तुम्हें सोचने का टाइम नहीं मिल रहा, and then you suddenly have a job and then you are suddenly married. You just have no time to think क्या हो रहा है लाइफ में, like life just जा रही है, and then suddenly to be able to get out of all of that and have that kind of a euphoric moment. I thought, man, this is it. I love this feeling and I would like to feel like this for a very long period of time. तो मुझे लगा यार मैं वापस आऊंगा तो शायद जब भी मैं कोडिंग करूंगा तो मुझे एक्चुअली यही फीलिंग आएगी. Because I thought, yeah, I'm passionate about technology. Shouldn't I get the same happiness from my passion? Like, isn't it supposed to be, you are passionate about something and you do it and then you really are, just enjoying the journey. And so I'm like, if I'm passionate about technology, then ये enjoyment कहाँ चला गया है मेरा? मुझे तो वो enjoyment मिल नहीं रहा है इस, journey में से. So I came back and no, I didn't feel like that for my work at all. I just didn't feel like that. And so I said, maybe I should go and climb a mountain again. So थोड़े time के बाद I signed up to climb a mountain again and I climbed the mountain. And when I got to the top, that's exactly how I felt again. And since then I've not stopped. Since then I've just went back to the mountains over and over and over again. And now it's no longer about, getting to the top and feeling like that. But now I'm just in love with the journey itself. Because आप लोगों को, कभी-कभी, लोग मेरे videos देखते हैं. Oh, your photos are so amazing. Oh, your videos on the top are so amazing. Oh, this journey looks so amazing. I want to be a mountaineer. I know they'll, say all these things. But you don't see the 10 boring years of hard work that I have put in. Yeah. Day in, day out, हर सुबह को उठो और जाके वो करो whatever it takes to get to the top of Everest. People सिर्फ end result देखते हैं. People देखते नहीं वो 10 साल कैसे निकले. अभी भी like last 1.5 साल से मैं बॉडी बिल्डिंग जर्नी पे हूँ. And people will look at, an end result, end goal of my photo, showing my six pack or showing, my jacked body. And they are like, wow, yaar, Kuntal, I also want such a body. I'm like, do you know the amount of hard work that I have to put in day after day after day? And if you are willing to be that consistent, that disciplined, that razor focused about your goal, believe me, दुनिया में कोई भी गोल होने दो, एटलीस्ट तुम अच्छा अटेम्प्ट तो मारोगे. ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि तुम टॉप पे पहुंचने वाले हो. देयर इज नो गारंटी कि तुम अपने गोल के टॉप पे पहुंचने वाले हो. देयर इज नो गारंटी जो मेरा नया गोल है उसके टॉप पे मैं पहुंचने वाला हूं. बट नोइंग दैट कि मैं पहुंचूंगा, मैं नहीं पहुंचूंगा, आई डोंट केयर अबाउट दोस थिंग्स. मेरा काम है काम करना, मेरा काम है एफर्ट डालना, मेरा काम है वो ग्राउंड वर्क करना, ताकि when it comes time to get to the top, I have given myself the best chance for succeeding. There's no guarantee for success, but at least I have given myself the best chance. ठीक है, फिर नहीं हुआ तो ठीक है यार, I will learn something from that. I will figure out कि मैं क्यों फेल हुआ, उसमें से सीख के मैं आगे बढ़ ही जाऊंगा यार कैसे तो करके. ठीक है. So again, I will kind of get back to the point while हमने शुरू किया कि मैं कैसे माउंटेन से प्यार में पड़ गया. But
I will again get back to the point that there is no shortcut here. There is no Hmm. shortcut. You Hmm. have to love the journey. You have to fall in love with the process. You have to show up every single day and do all that boring hard work. It will be very, very difficult. Some days you'll feel like not wanting to do it. There'll be sometimes weeks and months where you'll not want to do it. Hmm. Despite the lack of motivation, despite the lack of all, internal effort, तुम्हें still show up करना है, काम Hmm. करना है, Hmm. and be ready for the time when it comes of, you to make that journey to the final top. So that's kind of, again, like summarizing. Uh, I am no longer in love with that state of mind. I'm glad I can still achieve that state of mind. Yeah. Uh, and that generally happens with mountains as a medium. Hmm. But what I truly love is this journey itself, is Hmm. showing up every day and putting in the hard work. मैं अभी इस चीज से प्यार में पड़ गया हूँ, और Hmm. ये मैं काफी टाइम पहले इस चीज से प्यार में पड़ गया था. And something that I tell everyone who goes on a journey, Hmm. fall in love with the process, fall in love with the work that you are going to do. क्योंकि सारा का सारा ट्रांसफॉर्मेशन, सारा का सारा बदलाव, that everyone says कि, I want to become a better version of myself. Hmm. How the heck are you going to become a better version of yourself? Hmm. The only way, if you are going to become a better version of yourself, is if you are going to put in that hard work and try to be that next version of yourself ना. Yeah. Hmm. सोफे पे बैठ के नेटफ्लिक्स देख के तो तुम अपने बेटर वर्जन नहीं बन जाने वाले हो, Not at राइट? all. काम Hmm. तो करना पड़ेगा उसके लिए. 100. Hmm. कोई कोई मैजिक सप्लीमेंट खा के या कोई मैजिक ये करके भी तुम बेटर वर्जन नहीं बनने वाला. तो यार Not at काम all. तो करना ही करना है. Hmm. एंड द फास्टर you fall in love with ये हार्ड वर्किंग और ये काम करने का माइंडसेट, the easier your journey is going to be. 100% सर. एवरेस्ट की बात करते हैं सर. सर लोगों को एवरेस्ट एक आइकॉनिक चीज भी लगती है, एंड उसके साथ वो सर थोड़ा थ्रेटनिंग भी हो जाते हैं सर वेन एवर दे लिसन द टर्म माउंट एवरेस्ट. सर सर लोग यूजुअली एवरेस्ट से डेथ को क्यों एसोसिएट करते हैं सर? I think probably a lot of it is just marketing hype. Because Everest, as you said, is an iconic mountain. It is the tallest mountain in the world, right? हर Yes. सीजन जब भी एवरेस्ट के 2 महीने का क्लाइंबिंग होता है तो एंटायर वर्ल्ड के मीडिया की नजर एवरेस्ट पे रहती है. And whatever whatever thousands and hundreds, इतने सारे लोग बोलेंगे अरे K2 हार्ड है, अरे ये दूसरा माउंटेन ऐसा, अरे ये दूसरा माउंटेन. कुछ भी बोल लो, आम आदमी की नजर में तो एवरेस्ट एवरेस्ट ही है, राइट? एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. एवरेस्ट इज दिस एपिटोम ऑफ एवरीथिंग, एपिटोम ऑफ चैलेंज, एपिटोम ऑफ टफनेस, हर सेंस में. और एवरेस्ट एक सिंबॉलिक चीज भी है, राइट? हर आदमी के जिंदगी में एक एवरेस्ट होता है. मेरे जिंदगी का एवरेस्ट वाज लाइक लिटरल एवरेस्ट, बट हर आदमी की जिंदगी में एक एवरेस्ट होता है, और वो हर आदमी वो एवरेस्ट क्लाइंब कर रहा है. बट गोइंग बैक टू एवरेस्ट इटसेल्फ, with all this amount of exposure on Everest, all this amount of publicity, all these, people focusing on Everest, when 10, 15, 20 people die on Everest every year, then kind of, natural association है यार कि Everest पे लोग मर जाते हैं. And, though there are these gory images coming out of people losing their fingers, people losing their toes, and, dead bodies on the mountain, and horror stories of rescues on the mountain, and so many things that are constantly, coming in the news media, and people have this, perception that Everest death. Like I still remember in 2002 when 2010 when I announced to my family that I wanted to climb Everest. Yeah. Their first reaction was, यार मर गए तो क्या होगा? They were more concerned about my well-being. They were concerned more about my safety. They were concerned about me. They were very supportive. It is your dream and we want to support your dream. But what about, death on Everest and Osam? So even for them, for every layman, when they will hear about Everest, yes, it is iconic. Yes, it is challenging. But yes, they will also have these connotations of death. Yaar,
एवरेस्ट पे लोग मरते हैं यार, तू मत जा यार प्लीज, बी सेफ. Those kind of things will kind of happen. So I do think it is more very perception driven. Yeah. uh, at the same time, look, mountains are a risky endeavor. Hmm. Any mountain in the world for that matter, including a simple trek that I do in the Sayadri near Mumbai. Hmm. Hmm. Every year, three or four people die in the monsoons near Sayadri. Okay. Then, but people never say that Matheran is very risky. People die on Matheran. ऐसा तो कोई बोलता नहीं है. There are hundreds and hundreds of people who die on mountains every year. So, mountains or climbing mountains is a very, very, very risky endeavor in itself. And I think you have to be kind of, accepting that things could really go wrong on a mountain and that you may not come back home. But that does not mean that I have a death wish or anything. ठीक है, मैं जब भी घर पे बोल के जाता हूँ तो ऐसा नहीं कि मुझे डेथ विश है, मुझे कोई सुसाइड मिशन पे जाना है माउंटेन पे. I'm a Yeah. very strong climber Yeah. and I love climbing and I would love to climb Everest even when I am 80. Hmm. Heck, why would I want to die on the mountain? मैं पागल हूँ क्या? Right. मैं मर जाऊंगा तो मुझे कहाँ चांस मिलने वाला है 80 years में वापस एवरेस्ट चढ़ने को. So in that sense, I am a very good climber. So Hmm. not being overconfident or not मेरा बाजा नहीं बजा रहा हूँ खुद का. A reasonable climber. I can take Yeah. care of myself on the mountain. Hmm. But at the end of the day, I also am accepting of the fact that mountain is going to control my destiny. I Hmm. don't control my destiny. तो मैं Hmm. अपने मैं को कंट्रोल छोड़ देता हूँ. Hmm. कभी कैसा था ना कि लोग अपने लाइफ में एकदम कंट्रोल 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 कंट्रोल, आई कंट्रोल माय एवरीथिंग. The moment you step foot on the mountain, you don't control your destiny. It's the end of Hmm. story. You don't control your Hmm. destiny. I'm not saying that means like गोविंदा की मूवी की तरह मैंने मेरा भेजा साइड में रख के चलना शुरू कर दिया. I'm still very situationally aware. Yeah. I use all my skills possible to maneuver that terrain, to climb Hmm. through that terrain. Hmm. And in case if something, kind of happens, to try and save myself. But there could be a situation where a big avalanche could, kill me with even Hmm. before मैं पलक झपकूं उसके पहले मेरी मौत हो सकती है. And that is Hmm. a reality on the mountain. So something that I repeatedly tell on all my podcasts is that, like fear of death does not stop me from going out and climbing the mountain or achieving or pursuing my dreams. Yeah. ठीक है, जो जो चीज फ्यूचर में हो सकती है, जो चीज मैंने देखी नहीं है, उसके लिए मैं अपने प्रेजेंट को क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं? 100%. अगर मैं ऐसे बैठ गया सोच के यार, हाँ यार मैं तो मर सकता हूँ माउंटेन पे, छोड़ो यार नहीं क्लाइम करना, Hmm. देन लॉस किसका है? लॉस तो मेरा ही है एट द एंड ऑफ द डे. No risk, no reward. Or rather, calculated risk, right? Like rather Hmm. I'm saying that, hey, you know what, I am going to Hmm. train myself as hard as I can. Hmm. I'm going to build my skills. Hmm. I am going to get a lot of experience, and then Hmm. I'm going to go climb this mountain. Hmm. And if things don't work out, or if I feel it's too risky, I will back off and I will come home. ठीक है, rather than saying कि यार मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं घर पे बैठने वाला हूँ. Hmm. In which case your answer to every passion will always be no. ठीक है. Yeah. So that's kind of my thinking, that you can't let fear of death like stop you from living your life or from pursuing your passions. That's 100%. kind of my thought process. Hmm. Sir, actually, I was calculating this aftermath of climbing Everest, sir. Sir, I wanna ask you कि एक बार एवरेस्ट पे सबमिट करने का कितना एक्सपेंस होता होगा? uh, so depends, but let's say मैं मेरे केस की बात करता हूँ. क्योंकि काफी डिपेंड होता है कि तुम कैसी एजेंसी के साथ जाते हो क्लाइंबिंग करने, तुम्हारा ट्रेनिंग क्या है, तुम कैसा गेयर परचेज करते हो. बट let's calculate the cost of my first attempt of climbing Everest. Luckily, my first attempt of climbing Everest was sponsored by my employer. So I went with a Western agency. A Western agency means a Canada-based agency था जिसके साथ मैंने climbing किया. So just the climb itself was $55,000. और उसके ऊपर my training budget was about close to about $10,000 to $12,000.
Yeah. एंड उसके ऊपर मेरा गेयर बजट वाज अप्रोक्सीमेटली अबाउट $5,000. तो भैया पकड़ लो $70,000 मैंने स्पेंड किया. अगर मैं आज के जमाने में $70,000 को कन्वर्जन करूं तो 7,000 चलो बॉल पार्क 50 लाख रुपए तो हो गए. ठीक है. तो 100%. दिस इज बिकॉज आई वेंट विद अ वेस्टर्न एजेंसी. अब उसके ही अगले साल मैं एक शेरपा एजेंसी के साथ गया एंड इंस्टेड ऑफ पेइंग $55,000 आई पेड $30,000 टू द शेरपा एजेंसी or to a Nepali agency to be clear. So I will break it down for everyone who's tuning in. If you are going to go with a Sherpa or a Nepali agency, which is what my recommendation generally is, find a very reliable Nepali agency that does a very, very good job at, putting together the logistics and team and, all the details on the mountain. About 30 से $35,000 लगेंगे उसके. About $5,000 to $10,000 अपने ट्रेनिंग के लिए बजट करो और अबाउट $5,000 जितने डॉलर अपने गेयर के लिए बजट करो. सो अप्रोक्सीमेटली आई वुड से $45,000 जितने होंगे. और अगर उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया तो अप्रोक्सीमेटली आई वुड से एनीवेयर लाइक अबाउट 35 to आई थिंक 35 लाख जितना हो जाएगा. आई फील यू कैन डू द मैथ बट आई वुड थिंक अबाउट 35 लाख जितना हो जाएगा. सर मैंने रिसेंटली आर्टिकल्स में पढ़ा है कि एवरेस्ट पे शिट और वेस्ट मैनेजमेंट का कोई इशू चल रहा है विच इज़ टेक्निकली वेरी रॉन्ग फॉर सच एन आइकॉनिक माउंटेन. सर इज इट रियली ट्रू? So here's what happens on Everest. Until the base camp, the shit management is done really, really well. Because every team has to manage their own shit, and everyone does it in barrels and at very, very designated locations. फिर ये सारे barrels जब भी भर जाते हैं तभी इन सारे barrels को we send it back down into the valley at places where it can be disposed of or dried and used as manure and those kind of things. ठीक है. तो एक ये बेस कैंप का तो प्रॉब्लम सॉर्ट हो गया. चलो बेस कैंप पे सब कुछ थोड़ा बहुत रेगुलेटेड है. बट आप एक बार बेस कैंप पे ऊपर जाओगे जहां माउंटेन बहुत ज्यादा हॉस्टाइल हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली वहां कोई ये सब फॉलो नहीं करता है. जैसे अगर आप माउंटेन्स ऑफ अमेरिका देखोगे या माउंटेन्स ऑफ यूरोप देखोगे या माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका देखोगे तो वहां लोग अपना शिट एक्चुअली बैग्स के अंदर करते हैं और वो सारी की सारी बैग्स वो लोग माउंटेन से नीचे लेके आते हैं वापस. अनफॉर्चुनेटली एवरेस्ट पे ऐसा नहीं होता है. अनफॉर्चुनेटली एवरेस्ट पे सारा का सारा शिट वहीं होता है, एवरेस्ट के पहाड़ के माउंटेन के ऊपर ही. तो दिस इज अ ऑनगोइंग प्रॉब्लम. I do hope it gets resolved. There is a problem of trash as well, but it is getting slowly and steadily resolved, where a lot of people used to just dump their tents and dump their, अगर कोई सामान नहीं चाहिए या फिर ऑक्सीजन एम्प्टी ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो गए या फिर खाने पीने का कचरा हो गया, वो सब कुछ डंप करके वो लोग नीचे आ जाते थे. बट विथ मोर एंड मोर, लाइक फॉर एग्जांपल इन माय टीम वी incentivize the Sherpas such that every single empty oxygen bottle they bring down, they get extra money. So every single oxygen bottle in my team is always brought down. Every tent से लेके जो खाने पीने का कचरा है वो हम सारा का सारा जमा करते हैं. एवरी टेंट वी ब्रिंग डाउन द माउंटेन. एंड मैं कोई बढ़ाई चढ़ाई करके ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, अपने आप को पीठ के पीछे नहीं थपथपा रहा हूँ. ये तो बेयर मिनिमम करना जरूरी है. ठीक है, हर एक्सपीडिशन को करना चाहिए. और उसके लिए हमें गाजा बाजा नहीं बजाना चाहिए कि यार हम तो अपना सारा ट्रैश नीचे लेके आए. ट्रैश छोड़ने की चीज है जो तुम बोल रहे हो, तुम ट्रैश नीचे लेके आए. तो एटलीस्ट in majority of the teams that I've seen, the good teams that I've seen, they bring all their trash down the mountain, including tents. Tent is not the trash, but tent कभी कभी कैसा होता है ना, टेंट थोड़ा बहुत फट गया ना तो लोग ऊपर ही छोड़ देते. हम क्यों नीचे लेके जाए. So I ensure that my team brings down our tents, जो भी ऊपर कचरा वाला सामान हो गया, जो भी जितना लाइक empty gas canisters होते हैं, सारा कुछ हो गया वो लेके आए. empty oxygen cylinders हो गया. I try and ensure कि हमारी टीम जो बेयर मिनिमम जितना कर सकते है उतना कर रही है. एंड हर साल एक क्लीनिंग एक्सपीडिशन भी होता है एवरेस्ट पे. So this cleaning expedition's job is to go from camp to camp to camp and clean up those camps and bring down all the garbage back down. So hopefully
both working in tandem for another few years, probably at some point will not require any cleaning expeditions happening on the mountain at all. I hope that agencies will continue bringing down all their stuff, and I hope that people will, start working on figuring out how to address the shit issue, क्योंकि वो अभी Yeah. तक address नहीं हुआ है, frankly speaking. तो Yeah. वो address करना जरूरी है, where I personally feel something like जहां लोग अपना shit वापस नीचे लेके आए, Hmm. प्लास्टिक बैग्स में करे, और लाइक एक कॉमन बड़ी बैग बना के उसके अंदर डाल के वो सारा शिट probably is brought down to camp 2, from where maybe Sherpa's not carrying it out, but just हेलीकॉप्टर में लोड करके उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है, so that Hmm. unnecessarily Sherpas are not being asked to do all this work. So, Hmm. or frankly speaking, if every individual climber can just carry their shit down, इतना ज्यादा तो Hmm. कोई 4-5 दिन में shit करता है नहीं, ठीक है, Hmm. हायर माउंटेन पे. तो if every individual climber can just bring their own shit down, Hmm. I think that would be problem solved in some sense. But ये सारा आई थिंक पहले बेसिक, आई थिंक उसके पहले और सारी चीजें करनी है, जैसे टेंट का कचरा, या फिर ऑक्सीजन बॉटल्स, या फिर खाना पीने का कचरा जो छोड़ देते, अरे पहले उतना तो लेके आओ शिट का, फिर नेक्स्ट रेजोल्यूशन करेंगे. तो आई डू थिंक probably with more and more conscious climbers and more and more conscious adventure operators on the mountain, hopefully slowly and steadily, and with all Sherpa climbers and Sherpa guides Hmm. also getting sensitized around climate change, around क्योंकि वो ग्लेशियर से भी थोड़ा पानी का सोर्स होता है नीचे के वैलीज में. तो आई डू होप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लॉट ऑफ ये सेंसिटाइजेशन होगा, और टैंडमली सब वर्क करके ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे. बट दैट्स माय होप एट दिस मोमेंट. सर नॉर्मली एक सिविलियन को ये चीज काफी ग्रॉस लग सकती है, मगर दिस इज द रियल इशू दैट माउंट एवरेस्ट इज फेसिंग सर. सर कमिंग ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वीगनिज्म, सर आई फील लाइक कि लोगों के अंदर वीगनिज्म को लेकर काफी ज्यादा अनअवेयरनेस है. सर आई वांट यू टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वीगनिज्म, एंड सर व्हाई डू पीपल डाउट कि एक वीगन कभी माउंट एवरेस्ट जैसे माउंटेन को एक्चुअली सबमिट नहीं कर पाएगा. सी, for me, veganism is about minimizing cruelty towards animals in all way, cruelty and exploitation of animals in all ways Hmm. possible. Hmm. And growing up in a vegetarian family, I was always kind of attached to animals in the sense that, hey, we don't eat animals because we are compassionate towards animals. Hmm. तो हम एनिमल्स को हार्म नहीं पहुंचाते, एंड द माइंडसेट वाज ऑलवेज कि यार एनिमल्स हमारे जैसे ही है, उनकी भी फैमिलीज Hmm. है. तो Hmm. इफ आई एम नॉट गोइंग एंड अगर मैं मेरे किसी जान पहचान वाली फैमिली को हार्म नहीं कर रहा हूँ, या मैं उनको मार के खा नहीं जा रहा हूँ, तो मैं वो एनिमल्स के साथ क्यों करूंगा. So my mindset, around vegetarianism was always centered around this. And I remember when I was doing my master's degree in the United States, uh, one of my roommates started pointing out to things like, but you are still wearing a leather belt. तुम स्निकर्स बार खा लेते हो, पर स्निकर्स बार के अंदर तो एग्स है. तो Hmm. यू आर स्टिल कंज्यूमिंग एग्स, यू आर स्टिल कंज्यूमिंग लेदर, एंड all of these things. So I started asking him, what's the problem with leather? Hmm. Because truly speaking, in some sense, I had no clue, what leather is. I thought it's just a belt. It's available in a store. मैंने जाके Hmm. परचेस किया, उसमें कहाँ मैंने किसी एनिमल को मारा है, Hmm. उसमें तो कुछ बात ही नहीं हुआ एनिमल के मारने की. या वो तो स्निकर्स बार का है, ठीक है यार, मुझे तो एग दिख नहीं रहा है, तो प्रॉब्लम कहाँ है. ऐसे हमें डिसेंसिटाइज कर दिया गया है इस लेवल तक कि ये सारी चीजें तुम्हें एक सुपरमार्केट के शेल्फ पे मिलती है, और तुम खरीद रहे हो, और तुम सोच रहे हो प्रॉब्लम क्या है. अगर मैं सुपरमार्केट के शेल्फ से एक कंप्यूटर खरीद रहा हूं, तो Yeah. एक स्निकर्स बार या एक लेदर बेल्ट खरीदने में क्या प्रॉब्लम है, सब सेम तो हुआ. सो आई हैड नेवर मेड अ कनेक्शन दैट लेदर इवेंचुअली कम्स फ्रॉम अ डेड एनिमल, Hmm. और फॉर दैट मैटर
an egg also comes from a very exploitation driven or a very abuse driven or a very slaughter driven industry. Hmm. So when I started connecting the dots that there is no difference between a piece of meat, which is a dead animal, Hmm. and a glass of milk, which is also coming from a very horrifying industry, or that matter, a leather belt, or that matter, an egg, or that matter, a woolen sweater that I was wearing, or for that matter, any industry that has to do with animals and animal use. Hmm. Okay. I connected the dots that they are all the same. They are all equivalent to meat at the end of the day. And if I'm not Yeah. eating meat, then why am I, consuming all of these things? Hmm. तो मेरे लिए बात हो गई कि यार अब मैं क्या कर सकता हूँ आगे. So Hmm. there were two ways. I could have said ignorance is bliss and life अच्छे से Hmm. चल रही है, चलने दो जिस तरह चल रही है. और Hmm. second choice would have been कि boss I do something about it. Hmm. And for the first time in my life, I decided यार मैं लाइफ में एक स्टैंड लेने वाला हूँ. तभी तक आई वाज दिस दिस हैप्पी गो लकी गाय, अपने Hmm. फ्रेंड्स के वर्ल्ड में एंजॉय कर रहा था, सब Hmm. कुछ ठीक ठाक चल रहा था. बट दैट टाइम आई डिसाइडेड आई एम गोइंग टू टेक अ स्टैंड फॉर समथिंग. And I realized that there are two things that are directly under my control: Hmm. what goes in my mouth and Hmm. what goes on my body. Hmm. That is like that is the food that I eat, the clothing I wear, and potentially the hair and shampoo या soap products or the toothpaste and those kind of things I use. It is एक मैंने bare minimum एक छोटी एक list बनाई कि यार मैं क्या मेरे कंट्रोल के है अंदर डायरेक्टली Hmm. 100%. और मैंने डिसाइड किया कि यार उस चीज में मैं कहीं भी एनिमल प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने वाला हूँ. Hmm. तो दैट इज where my journey as a vegan started, where vegan is a vegetarian but taking it to the next level where दूध, दही, घी, बटर, चीज, पनीर, अंडा, लेदर, वुल, सिल्क, Hmm. डाउन फेदर्स, कोई भी चीज, हनी हो गया, जैसे जिसमें एनिमल का शोषण किया जाता है या एनिमल एक्सप्लॉइटेशन या फिर क्रूअल्टी या फिर उसका यूज या अब्यूज या कुछ भी किया जाता है, आई डोंट यूज इट. एंड लॉट ऑफ पीपल कम बैक एंड टेल मी बट यार हम तो गाय को अच्छे से ट्रीट करते हैं, बट हम तो ये अच्छे से ट्रीट करते हैं, हम तो ये अच्छे से ट्रीट करते हैं. तो लुक ओवरऑल when you look at dairy, it is an industry at the end of the day. ठीक है. Hmm. Hmm. And the animal is only treated as a shelf object to drive the maximum profit. Hmm. तो जब भी प्रॉफिट की बात आती है ना, तभी एनिमल लाइफ की बात नहीं आती अनफॉर्चुनेटली उसमें. ठीक Hmm. है. क्योंकि इमेजिन करो कि कितने ऑर्गेनाइजेशन जो लोग ह्यूमंस का ही शोषण करते हैं, Hmm. जब ह्यूमंस का ही शोषण हो रहा है तो एनिमल्स की कहाँ बात आने वाली है यार. एनिमल्स को तो कोई भाव भी नहीं देता है. पीपल तो Hmm. डोंट इवन ट्रीट एनिमल्स लाइक एनिमल्स, दे आर लाइक ट्रीटेड Hmm. एज शेल्फ ऑब्जेक्ट्स एनीवे. हाँ सर, तो उन्हें बिल्कुल साइडलाइन कर माय दिया गया है. करेक्ट. सो माय choice is a direct stand against the cruelty happening towards animals, and it is a stand for animal rights, and it Hmm. is a stand for animal liberation, because I truly believe that every animal is a sentient and emotional being Hmm. with individual character like us. Yeah. उनकी भी फैमिलीज है, उनको भी लव करना है, उनको भी पेन Hmm. होता है, उनको भी स्ट्रेस आता है, उनके भी आंसू निकलते हैं. Hmm. दे आर को इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस प्लानट. Hmm. दे आर नॉट हियर फॉर अस टू यूज एंड अब्यूज. तो Hmm. वो हमारे साथ ये प्लानट शेयर कर रहे हैं, तो हमें Hmm. शेयर करना है, हमें उन्हें Hmm. यूज नहीं करना है, हमें उन्हें Yeah. एक्सप्लॉइट Yeah. नहीं करना है. तो Yeah. इस माइंडसेट से ड्रिवन है मेरा वीगनिज्म. Hmm. क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है कि आप Hmm. बहुत ही Hmm. स्वे हो गए हो प्रोपोगेंडा और उन सब चीजों से. यार Hmm. भाई, मेरा बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है. मैं आई लव एनिमल्स एंड आई वांट टू बी वेरी वेरी क्लियर इन माय कॉन्शियंस. इसीलिए Hmm. मैं वीगनिज्म करता हूँ, ना कि किसी के दिखावे के लिए या फिर किसी प्रोपोगेंडा के लिए या किसी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के लिए या किसी अलग चीज के लिए. मेरा Yeah. veganism is completely connected to my ethics and is completely connected to my compassion. 100%. Sir, coming to the later half of this podcast, sir, I want to ask you कि जब आपने एवरेस्ट सबमिट किया तो what was running through your mind, sir? Right.
I have summited Everest twice. So Yeah. both the times, different things Hmm. were running through my mind. Hmm. I think the first time it took me about 12 hours to get to the top from the Hmm. final camp. Hmm. And I remember the date distinctly. It was May 19th, about Hmm. 9:15 a.m. in the morning. And I was like, about 20 feet away from reaching the top of Everest. And my Sherpa Mingma Tenji was standing in front, like, on the top and waving, ke, ab, jaldi aa jao. And another climber friend of mine, his name is Rafiq Sheikh. Rafiq is also the first policeman in Maharashtra to summit Everest, and he was standing on the top of Everest and waving Maharashtra police ka flag. And so finally एक mind में एक वो एक like bomb blast होता है ना खुशी का. Yeah. Like ऐसा bomb blast हुआ कि यार मैं top पे पहुंच गया हूँ अभी. And so I think there were two emotions kind of running through my mind, and the first emotion was an emotion of absolute relief that यार Everest हो गया. And Hmm. I felt very strong at that point, so I very clearly in my mind knew that यार नीचे पहुंचना मुश्किल नहीं होगा. बिकॉज लोगों को लगता है चढ़ गए बहुत हो गया. अरे भाई चढ़ गए क्या है, मतलब नीचे भी तो उतरना है. यू स्टिल बिल्कुल वांट टू बिल्कुल. गो होम, यू डोंट वांट टू बी Yeah. अ डेड बॉडी लाइंग ऑन दैट माउंटेन. Yeah. And तो sir, I have heard इन माय that. माइंड आई वाज वेरी Sir, I've heard that गुड. climbing down from Mount Everest is also very critical. It is very critical, and that's Hmm. what the like in my mind I was very clear. नहीं यार, I have enough energy left to climb Hmm. down the mountain. So Hmm. like I was super relieved यार Hmm. हो गया एवरेस्ट. And then kind of was overcome by this intense emotion that यार life का biggest dream achieve हो गया है अभी. Yeah. And I just couldn't control my tears, and something I'd promised myself at base camp that I will not cry on top of Everest. Yeah. But that is the very first thing that I did on top of Everest. And Yeah. finally, slow and steadily, I reached the top, and Mingma was waiting there for me. And Hmm. um, it was, good 2-3 minutes kind of expressing my thanks to him, Hmm. and expressing my gratitude to the mountains Yeah. कि यार ऊपर चढ़ने दिया, and Yeah. summit पे time spend करने दिया, Yeah. and kind of just sitting and looking at the view. And then I had a satellite phone, तो घर पे भी phone करके बताना था Yeah. कि I've reached the top of Everest. Hmm. Hmm. So or net probably something that I have repeatedly said in so many of my podcasts, 20 most magical minutes of my existence is Hmm. probably uh, what was the 2016 summit of Everest. 2019 summit of Everest, on the very contrasting side, was I reached the top of Everest and I told Mingma picture लेते और नीचे उतरते अभी. Hmm. That's all. Because I knew that there was a lot of traffic coming from behind, Hmm. and I was climbing from the northern side of the mountain. On the northern side of the mountain, when you are going down and traffic is coming up, it is excruciatingly hard to kind of bypass the traffic and go down. And I knew that बहुत hard होने वाला है नीचे उतरना. प्लस विंड बहुत जोर से चलना शुरू हो गई थी, मेरे हाथ ठंडे होने शुरू हो गए थे, सब कुछ ठंडा फील होना शुरू हो गया था. लाइक पूरा मुंह मेरा छोटे छोटे आइसिकल से भरा हुआ था. एंड आई Yeah. वाज लाइक 5:30 बजे थे, क्योंकि दिस टाइम आई वाज मच फास्टर, मच स्ट्रॉन्गर गेटिंग टू द टॉप. So it was 5:30 in the morning when I was at the top. And I told Mingma, let's take the picture and let's get out of here. यार, I don't have anything to prove to anyone. Already एक Hmm. बार सबमिट कर चुका हूँ एवरेस्ट. Hmm. ये मेरा थोड़ा अलग ही प्रोजेक्ट था. So Hmm. got to the top and took the picture, and then focus was on getting back down. And as you rightly pointed out, getting down is much harder, Hmm. because कैसा कैसा होता है ना कि people put in all their effort and energy in getting to the top. Hmm. पर यार वो भूल जाते कि यार ये राउंड Yeah. ट्रिप जर्नी है, वन Hmm. वे जर्नी पे नहीं जा रहे हैं ना हम. Hmm. तो कभी कभी है ना वो लोग मिस कैलकुलेट कर देते कि वो कितनी एनर्जी ऊपर जाने में लगानी है और कितनी एनर्जी नीचे के लिए बाकी रखनी है. एंड फिर नीचे उतरते वक्त उनकी बुरी हालत हो Hmm. जाती है. एंड इमेजिन द टेरेन गेट्स हार्डर, द Hmm. स्नो गेट्स सॉफ्टर, आप Hmm. स्लिप ज्यादा होना शुरू होते हो, Hmm. कभी कभी ट्रैफिक होती है. योर फोकस नीड्स टू बी 500%.
Yeah. ऊपर चढ़ते वक्त तो तो भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई ना, तो माउंटेन्स आर फॉरगिविंग व्हेन गोइंग Hmm. अप. व्हेन गोइंग डाउन मिस्टेक हुई तो बहुत बुरी तरह से आपकी लाइक आप पिट जाओगे माउंटेन पे. तो योर फोकस हैज टू बी हायर, योर बॉडी हैज नो एनर्जी. Hmm. खाना पीना आपने बहुत घंटों से नहीं खाया है. आप ऑक्सीजन डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट 28-29 हजार फीट पे चल रहे हो इतने टाइम से. इट इज अ वेरी 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 डिफिकल्ट थिंग, विच इज व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल एंड अप dying on their way down, not while going up. Hmm. क्योंकि क्या होता है कि उनके बॉडी में वो हिम्मत ही नहीं बचती है. कभी कभी वो लोग Yeah. बैठ जाते हैं, उनको Hmm. मैसिव हार्ट अटैक आता है. Hmm. वहीं के वहीं वो लोग खत्म हो जाते हैं. Hmm. और कभी कभी कैसा हो जाता है कि स्नो ब्लाइंड हो जाते हैं, Hmm. दिखना बंद हो जाता है उनको, क्योंकि Hmm. उन्होंने कभी मिस्टेक कर दिया, उन्होंने गॉगल्स ओपन कर लिए और 10-15 मिनट एक्सपोजर रख दिया, अचानक अभी स्नो ब्लाइंड हो गए, तो अभी वो देख नहीं पा रहे कैसे चलना है, Hmm. कहाँ पैर रखना है. दे आर कंप्लीटली Hmm. डिपेंडेंट ऑन देयर शेरपा. कभी कभी उनका ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, तो अभी बिना ऑक्सीजन के चलना है. दे आर नॉट ट्रेन्ड फॉर एनी ऑफ दीज Yeah. specific circumstances. And then these circumstances can eventually lead to accidents or lead to Hmm. Misery. bad conditions. तो ये सारा Hmm. कुछ होता है. तो yeah, uh, peop- it- it's people have to plan it a lot better. It is not a one way journey, it's a round trip, and Hmm. both the trips have to be planned very well. Hmm. Especially coming down वाला trip. ऊपर पहुंचे ना पहुंचे, नीचे 100% पहुंचना है. Hmm. 100%. Thank you for your time, sir. And sir, I feel ki this podcast is going to spread a word about your achievements and whatever awareness and respect to Mount Everest needs to be spread. I think this podcast is carrying all of those elements, sir, and people should definitely share this ahead as well, sir. Thank you for your time, sir. Thank you so much. Thank you so much.